अस्सलाम वालेकुम and hello everyone. I am Shazia from Fuchsia Magazine और हमें आज join करेंगी Dr. Sabah Zain. Dr. Sabah Zain is a clinical psychologist and she practices at the Doctors Plaza in Karachi. She has over 13 years of experience. आज हम उनसे बात करेंगे on mental health issues related to the coronavirus lockdown all over the world but specifically Pakistan में. अस्सलाम वालेकुम Dr. Sabah. वालेकुम अस्सलाम शाजिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप थोड़ा सा बताएंगी डॉक्टर सबा कि एग्जैक्टली आप एवर सिंस ये जो कोरोना वायरस शुरू हुआ है इसका लॉकडाउन, तो व्हाट आर द चेंजेस, क्या चेंजेस हुए सोसाइटी में जो आपको नजर आ रहे हैं, या हाउ पीपल रिएक्टिंग टू दिस रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ? Well, overall, if you're asking me about mental health, तो obviously बहुत सारी चीज़ों में deterioration भी आई है। एक जनरल पब्लिक के अंदर एक क्योंकि अनसर्टनिटी है हर चीज़ के बारे में, it's actually globally, it's not just here, it's all over the world, which makes it actually worse because that's the only thing that's coming from everywhere then. So deterioration आई है in all mental health areas, in all areas in general. आई है for people who were previously not affected by mental health issues as well. उनमें भी पेशेंट्स नॉन पेशेंट्स अब सब एरिया में वल्नरेबल अब हम सब हो गए हैं. Okay, Dr. Sabah, can you tell us why do we feel so anxious? Why are we all feeling so anxious these days? What is the main reason? Well, if I was to say it in one word, I would say uncertainty. Okay, it's uncertainty because it's a new thing. It's something that the world does not know much about. We're learning as we're going, right? So it's learning on the go for everyone, for even the people who are taking care of us, the healthcare professionals. उनके लिए भी new है. कोई भी in control क्योंकि नहीं है. There's a lot of ambiguity. There's a lot of uncertainty, which makes it all the more even more encompassing. तो उस अनसर्टनिटी की वजह से जो है एंजाइटी आ रही है. इट्स नेचुरल फॉर एंजाइटी टू, आई मीन इट वुड बी, इट्स क्वाइट नॉर्मल एक्चुअली दैट वी आर ऑल फीलिंग एंग्शियस इन दिस स्टेट बिकॉज लाइक आई सेड, कोई अगर प्री सेट पहले से बने हुए एसओपीज हो कि ऐसा हो तो ऐसा करना होता है, तो और भी दूसरी चीजें होती हैं जो मतलब लाइक वी कीप ऑन हियरिंग about the COVID-19 that it's not, I mean, there's a small number of people who actually get, it's fatal for a very small number of people. The rest of it get affected. मगर क्योर हो जाते हैं वो, मगर क्योंकि उसके बारे में uncertainty है, you do this helps, this doesn't help. Those are all not research, proven, tested, verified things. So that's what's making everybody so anxious. ओके, सो ठीक है, हमें पता है कि आगे का नहीं पता, फ्यूचर नहीं पता, और हम चेंज नहीं कर सकते किसी चीज को, तो हम अनसर्टन है. लेकिन मैंने 2-4 चीजें सुनी थी कि जैसे आप खबरें मत देखा करें इतना, उससे आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं खोला करें या भेजा मत करें. तो डू यू एग्री कि जो हम न्यूज पे एक नजर रख रहे होते हैं दिन में, मतलब आई नो बहुत सारे लोग जो दिन में एक दफा भी नहीं देखते थे, वो 3 दफा देख रहे होते हैं खबरें. इज दैट मेकिंग अ डिफरेंस to the anxiety level? Absolutely. A lot of it. Media is making a huge difference. And you'll see in a lot of places, people will tell you, I mean, people are taking a mixed approach. Some people will tell you that, don't look at media at all. आप बिल्कुल न्यूज़ नहीं देखें, आप अपने सेल फोन में से इस तरह के ग्रुप्स में से हट जाएं, जो इस तरह के भी अप्रोचेस हैं. And then there are people who are glued to their phones and glued to the TV, trying to find out what's happening. And not just in their society, they'll be trying to find out in other places and trying to compare pattern forming and all of that. So you have to really, out of these two, you have to really find the middle ground. And you have to, I personally feel as a psychologist that my advice to people is always to keep a middle ground where they also keep abreast with what is happening, because that brings in some certainty as well. वो uncertainty को break करने के लिए कुछ न्यूज से आपको अब्रेस्ट रहना जरूरी होता है, so that you keep things in the right perspective and your perspective doesn't shift into a wider horizon of things, which where then your imagination starts stepping in. And then you're not living in a bubble. You can't live in a bubble. Also don't live in a bubble. Exactly. It's also important for you to know what is happening. So my point always is to identify, and this is what most of us are not doing, identify who you seem
to think is a reliable source. Obviously, I cannot name one because to each person is different. You identify who on, for instance, on the TV, what show or what news, channels do you find to be authentic, and just follow those then. Don't look at the other ones that you are finding to be, very, very controversial, or giving in, a lot of other kind of theories, या बहुत ज़्यादा panic create करने वाले हैं, जो इस किस्म के आपके even WhatsApp messages में कोई, there is a pattern. You have certain friends who are only sending you controversy theories, right? Then there are, this is a man-made thing, this is that. There are certain friends of ours who are only sending us those. And then there are certain friends of ours who are only sending us selected messages, which are going to be, you do this, this will help. So identify that and stick to that. Identify it and stick to that. Don't just go with the flow of, let me just see, let me just do that. Don't. For some people, yes, absolutely. Filter the news and filter the people in your life who are sending the news. And it's so important right now. It's important for our everyday lives as well. But especially these days, this is extremely important for us to do that. डॉक्टर सबा, मुझे ये बताएं कि ये बच्चे भी, मैंने सुना है, काफी इंटरनलाइज कर रहे हैं. छोटे बच्चे जो अब स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर पे होते हैं, दे आर नॉट सेइंग इट, लेकिन क्योंकि उनका रूटीन इतना चेंज हुआ है, तो आपके आजकल एक्सपीरियंस में ये आप देखने को आपको आया है? आर यू गेटिंग to deal with this problem also, that young children are facing it, the anxiety? Oh yes, of course. I mean, I think that this is one of those things that it's affecting everyone equally across the borders, within the society, within every segment of society, and within every age group of society. Unfortunately, this is one of those things that, मतलब हम इसके ऊपर जितनी बात करें ना, वो कम है कि कितना इसका रीच है internally across the circles. And तो बच्चे भी definitely इफेक्ट हो रहे हैं. अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा, पता नहीं कब स्कूल खुलेगा, जो है उसके अंदर इसमें बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं. तो बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, and they're struggling on two different levels. They're struggling because firstly, their lives are uncertain now. ठीक है, अब कब स्कूल खुलेगा, how are they doing it, the way they did things is different, their social life is completely impacted as well. Okay, then the adults around them are also reacting in not normal ways. So that is also an added factor that's making lives more difficult and making children definitely a vulnerable segment. अच्छा, जब हमारे मुआशरे में या हमारे घर में, हम घरों में रह रहे हैं अपनी न्यूक्लियस फैमिली के साथ, और अगर हम फोन पे बात कर रहे हैं किसी फ्रेंड के साथ, तो वो कहीं भी हो सकता है, in any part of the world. How do you identify कि किसी को someone is going through more anxiety than normal, and how, I'll come to the next question later कि हम help कैसे करें, लेकिन अभी अगर मुझे लग रहा है ये इंसान परेशान है, मुझे ये कैसे पता चलेगा ये हद से ज्यादा परेशान है एंड इनको हेल्प की जरूरत है? Well, as a layman, it's you obviously will not be able to identify कि इनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ, मगर आपको ये समझ में आ जाएगी कि इनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. I think the basic rule of the thumb that I like to use, मतलब to tell people, is if somebody is behaving out of character. If somebody is behaving out of character, अगर आपको लग रहा है कि अगर किसी को, जैसे कोई, अगर मुझे कोई परेशानी है, मैंने आपसे बात की, आपने उसका मुझे थोड़ा सा कुछ हल बता दिया, तो जितना हल बताया उतने हिसाब, उस प्रोपोर्शन में मेरी परेशानी कम होनी चाहिए. मगर अगर नहीं हो रही है, फिर भी at the end of the day I'm asking you the same thing again, or you feel like I'm not being able to implement that in my practical life, then there's a need for somebody else to step in and probably get through to them in a different way, so that वो identify कर सकें कि problem क्या है, और फिर उनको उस तरह से help कर सकें. So that brings me to my next question कि अगर हमें लगे कि किसी को help की जरूरत हो और हमने भी कोशिश कर ली है, is there a helpline, or because I have heard that you're working with something which I think has been set up by the government, if I'm not mistaken? Yeah, it's a private thing. It's not been set up by the government. It's a private thing.
तो And उसके बारे में आप थोड़ा सा प्लीज हमें बताएं कि what should we do, you and I or anyone I know who has a problem, हम क्या कर सकते हैं? well, because these are extraordinary circumstances, we जी. had to, in a very short amount of time, set up some kind of it's a telehealth service that we have started. Okay, it's a Okay. group of us. It's actually been started by a group of senior psychologists who've all come together to volunteer their time for this telehealth services. We partnered with Aman Foundation. Okay. Okay, so because they already had a telehealth service that was up and running, a lot of people don't even know about it. They already had a telehealth service which people could call Mental on. health, it was a specifically No, mental, this is nahi, now, okay. it was generally a telehealth service for Okay. overall health issues. उसमें Hmm. अगर कोई मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते थे तो आई थिंक वो उनका कुछ रेफरल सिस्टम था जिसके अंदर वो रेफर उनको करते हैं जो उनके पैनल में लोग होते हैं. अभी जो इस वक्त हम लोगों ने पार्टनर उनके साथ किया है, we've actually set up for mental health regarding the COVID-19, and it's for the idea came up with actually helping the doctors, the nurses, and the frontliners, जी, बिल्कुल. the frontliners, and also the COVID affected patients and their families. Okay, जिनको Okay. हुआ है या Hmm. जिनकी families को जो है ना, जिनकी families में से किसी एक को है, because ये लोग सबसे ज़्यादा affected लोग हैं. Affected. We've जी. also opened it to the general public now since the need is such. तो general public के लिए भी हमने open कर दिया है. You call on the numbers जिसका मैंने आपके साथ message भी share किया है. We can call on those. We'll share them Aman on the जी, you can screen. share जी. the numbers. उस पे call करते हैं तो जो psychologists on duty होते हैं, and these are all senior psychologists who volunteer their time, so we're available for certain days of the week and for certain hours. So we take on their call. Obviously, this is not like a full session that takes place in a clinical setup, but you're given approximately 30 minutes or so, which is good enough time for a professional to gauge your problem and to guide you. It is crisis counseling basically. So it happens, it's relatively shorter and quicker. So you get a lot of solutions. So for somebody, if you notice that somebody around you has an issue like that, if you guide them towards this, then they can call on this and a psychologist will talk to them. And कोई भी हो, domestic violence cases हो, वो कोई बच्चे हों, वो कोई बड़े हों, जो भी हों, या कोई आप caregiver हो किसी के, the patient themselves is not willing to call, because हमारे पास इस तरह के भी बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद नहीं willing होते हैं, मगर उनकी कोई family member को urge होती है कि मुझे call करके help लेनी चाहिए, तो वो भी call कर सकते हैं, and they're guided accordingly. Okay, so basically आप अमन फाउंडेशन को कॉल करें या वो जो नंबर है उसको आप कॉल करें, फिर आप डायरेक्ट आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, then you will be directed to connect concerned person. अगर वो yes, it's a depending on the step-by-step issue. process. You just call on there's the UAN number. If you call on the UAN number, that has been specified for the mental health professionals. तो वो आप वहाँ पे कोई अमन का representative उठाता है और वो उठा के आपको guide करेगा. They will do the connection. The person who's calling has to do nothing except for calling, and it's a free of cost service, by the way. So there's no charges for it. तो अब मुझे बताएं, अगर आपने जैसे एक दिन में 2 घंटे अलॉट करे हैं कि सबा डॉक्टर सबा विल बी अवेलेबल, तो उन 2 घंटे में क्या आपकी बैक टू बैक 4 कॉल्स हो रही होती हैं 30 मिनट्स ईच कॉल, या इतनी कॉल्स नहीं होती, या बहुत सारी कॉल्स होती हैं, और कितने डॉक्टर्स, आई मीन डॉक्टर्स काफी हैं? Doctors are the doctors enough to deal with this? Yes, they're enough with depending on the call. जितनी calls आएंगी फिर उस हिसाब से we'll take on more people on board as well. Right now also there's a good number of people who are on board and devoting their time. But you see, the thing always has been that one, awareness नहीं होती है लोगों को कि कहाँ call करना है, क्या करना है, और फिर अब जैसे आप पूछ रही हैं back to back call होती है नहीं होती. Like any service, takes a little bit of time to pick up. We've actually just been in, I think we've been functional for, this is going to be our 2nd week. So we've just been functional for a week now, and we've had a couple of calls in that. And back to back, I wouldn't say, but yes, I mean, more people could तो मेरा पूछने का मकसद ये था कि क्या
कॉल्स बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही हैं, या अभी इट इज इनफ टू बी मैनेजेबल विद इन द पूल ऑफ डॉक्टर्स जो आपके पास हैं? Right now, it's या quite manageable. ओके It's quite ओके manageable, but it was the first week, so we can't really say. Abhi, as it goes, we'll see. But we have lots of doctors, alhamdulillah, who are willing to give their time in, and we couldn't adjust them actually in our rotas. So ओके if the call pool increases, then we'll have जी, more people to come in. you'll have more people, great. लेकिन मुझे अब ये बताएं, एक या दो कॉल्स जो आपने रिसीव करी हैं और आपने मैनेज करी हैं, वो किस किस्म की कॉल्स हैं? लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो वो कॉल कर रहे हैं, या आपके कॉलीग्स ने किसी ने किया हो? Well, the kind of calls that we're receiving are actually mixed. We've also had a mother call in for a teenager who's already had some medical issues and was not compliant, medicine compliant, so wanted somebody to speak to her. She has some severe kidney issue and was not taking her medicines, and because अब यहाँ पे किसी hospital भी नहीं लेके जा सकते, या मतलब लेके तो जा सकते हैं मगर लेके जाना नहीं चाह रहे हैं लोग, सही भी है। तो घर में मैनेज करने के लिए आप मेडिसिन कंप्लाई, मतलब यू कैन फोरसी एज अ मदर, नहीं लेंगे मेडिसिन तो फिर प्रॉब्लम्स होंगे, तो वो इसको अवॉइड करने के लिए दे वर ट्राइंग, the mother was trying to get counseling for she was trying to get counseling for herself so that she could speak to the daughter, and फिर उसके बाद उनको जो भी एडवाइस किया गया था, we've had another caller who called again, surprisingly corona related कम लोगों ने कॉल किया है। अच्छा उसके अलावा I think people when they found out that there is a service like this, they were calling just like that. There were some people who were calling because they were previously diagnosed but not in therapy, or going to a psychiatrist or a psychologist, bipolar पहले से किसी को है, किसी को कुछ और इस तरह का इशू है, तो इस तरह के भी we've had callers. We've also had experience with people जिनकी कोई somebody who was in isolation was kept in isolation because उनका corona positive आया था. So we've also had a call like that, मगर वो उनको पहले हुआ था, अब negative आ चुका है. ओके Yes, there's another person who somebody in their family was in quarantine, was not in isolation. तो कहीं से ट्रैवल करके जब वो आए थे तब उनको रखा था, तो वो जो उनको उससे रिलेटेड एंजाइटीज थी, इस तरह के उनके लिए। तो अब आप कह रही हैं कि कोरोना रिलेटेड कॉल्स नहीं थी, बट प्रोबेबली पीपल जिनको अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स कम थी वो कम थी, वो ज्यादा हो गई हैं। ऑल्दो वो ये नहीं कह रहे कि क्योंकि हम घर पर हैं इसलिए हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या वो प्रॉब्लम ज्यादा हो गई हैं? बिकॉज जैसे अगर कोई बाइपोलर है तो उनकी प्रॉब्लम जरा ज्यादा उभर गई है, इट्स कम टू द सर्फेस बिकॉज ऑफ corona. Is that happening? Yeah, the two things are completely separate. No, actually stress exacerbates any problem. ठीक है, जिसका जो भी प्रॉब्लम हो, वो मेडिकल प्रॉब्लम भी हो, मेरा हमेशा का ये मानना है, आपको ब्लड प्रेशर हो, आपको डायबिटीज हो, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो, आपको बाइपोलर हो, आपको कोई भी साइकोलॉजिकल इशू हो, जो भी हो, स्ट्रेस जैसे जैसे आपके अंदर आता है बियॉन्ड अ सर्टेन कैपेसिटी, बियॉन्ड योर कोपिंग, तो फिर वो आपके प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। अच्छा डॉक्टर साहबा, इस लिहाज से मुझे आपसे ये पूछना था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घरों में अब डायरेक्टली लोगों से के साथ रह रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में हैं और थे बिफोर द कोरोना वायरस ऑल्सो। उनको किस तरह, व्हाट कैन अ पार्टनर हु इज इन एन अब्यूसिव रिलेशनशिप, सबसे पहले तो मैं पार्टनर के हिसाब से पूछ रही हूँ, वो क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? You mean the partner who is being abused or the partner? The partner who is being abused. Okay. So, well, yes, like all other problems, this problem is also one of those problems that is getting enhanced. Okay. So, because this problem is also going to be enhanced, one needs to be wary of the fact and be ready to expect things like that, because you see, दोनों sides से हो रहा है। पार्टनर जो अब्यूजर है उसकी जिंदगी भी इफेक्ट हुई है, और जो अब्यूजी है उसकी भी जिंदगी इफेक्ट हो रही है, इफेक्ट तो दोनों की जिंदगी हो रही है जी। ठीक है। एंड तो उस चीज को जितना ज्यादा ट्राई योर लेवल बेस्ट, इवन दो आई कंप्लीटली रियलाइज ऑफ कोर्स
like everybody else कि वो अब्यूजी जो होता है उसकी नहीं होती, उसकी फॉल्ट नहीं होती और उसकी तो कोई गलती नहीं होती है अक्सर औकात, और किसी भी तरीके से अब्यूज करना तो जस्टिफाइड नहीं होता, मगर फिर भी आप ऐसी सिचुएशन से हमेशा दूर रहें जो कि इस किस्म की चीज को जरा सा भी एग्जैस्टरबेट करती हैं, जरा सा भी कहीं से भी कोई भी फाइट इंस्टिगेट होना शुरू हो या कोई ऐसी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आना शुरू हो, तो अपने आप को वहां से डिटैच करना, अपने आप को वहां से दूर करना, ताकि वो सिचुएशन एस्केलेट हो ही नहीं। उसको पिक करने के आपके अपने अंदर जो है ऑलरेडी रिसीविंग होनी चाहिए। एंड इन माय एक्सपीरियंस विद पीपल हु आर abuse victims, they are able to pick it up actually. They feel helpless in not doing something, not being able to do something about it, but they are able to pick up signs and symptoms of when it's about to start and the triggering points and all of that. तो बस उसके अंदर थोड़ी सी जो है वो हेल्पलेसनेस को कम करके थोड़ी सी अपनी पावरलेसनेस को कन्वर्ट करना है into some kind of a power, and that is by moving away at least and not escalating these situations. Okay, so basically there are different kinds of abuses that people are going through. ठीक है, अभी तो मैंने रिलेशनशिप के बारे में कह दिया, शायद लोग ऐसी घराने में हो जिसमें मे बी उनके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ या भाई या बहन किसी के साथ या पेरेंट्स के साथ कोई सिचुएशन ऐसी हो. सो यू आर सेइंग कि ये हम वो ट्रिगर अवॉइड करें, उस ट्रिगर से हम डिटैच हो जाएं. व्हाट एल्स कैन वी डू? लाइक आपकी हेल्पलाइन को कॉल कर सकते, उसके आगे मतलब वो फंसे हुए तो वो फंसे हुए ही हैं, उसके कोई और उनका there's no way out. Is that what you're saying? No, not really. These are ways out. You see, you have to look at it. The perspective, Okay. our perspective of things also has to change now. Previously, the ways out were defined as different ways out. Now, ways out are going to be defined differently. Just like हम सब के लिए भी entertainment पहले कुछ और होती थी, अब entertainment कुछ और होती है. उसी तरीके से ways out उनके लिए, आपके लिए भी तो यही होता होगा ना. Entertainment पहले meant going out, meeting your friends, going to a cinema, going out for a meal, things like that. Now entertainment does not mean that. If I tell you to entertain yourself, you'll have to come up with something. You'll have to go in your kitchen to cook. You'll have to maybe watch a movie. You'll have to do things like that. उसी तरीके से ways out की definition भी अब change हो गई है. और ways out की definition में unfortunately हमें अब limited means में ही काम करना है. Limited means में यही है, और ये कोई कम नहीं है कि आप खुद देखें. मेरे ख्याल से honestly speaking, in my perception, this is actually a way in which they can actually come out of this more empowered, because staying in the limited situation, they will be able to convert their powerlessness into powerfulness, into empowerment, in terms of what I can do with the limited resources that I have. भागना हर चीज का उस सिचुएशन से हमेशा से सोल्यूशन नहीं होता है. हो सकता है अब क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है, उसको फेस करके अपने आप को एम्पावर कर सकें. और ये लाइक यू सेड कि यू नो इवन टॉकिंग टू अ प्रोफेशनल जो आपको स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर गाइड करे, आपकी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए टेलर मेक करके, तो आई थिंक दीज आर गुड वेज आउट. दिस इज नॉट सो, it's not as bleak as it may sound to us at the offset. So there are other helpline numbers other than Aman Foundation के साथ जो आप कर रही हैं, जहां लोग कॉल कर सकते हैं to get help and have a professional talk to them. Well, I've heard of some of them. I won't be able to give you exact numbers or something, but I have come across one or two other people. But बहुत कम है mental health के. Mental health के बहुत कम है. Generally speaking, there are people, but I am sure अगर उनको call करें और कोई mental health issues के general coronavirus related, you know, for as a service people are you know offering, आप उनको call करेंगे तो अगर किसी के mental health issues होंगे, I'm sure they've thought of some kind of a बैकअप, उनकी कोई पैनल में होता होगा, कुछ सोल्यूशन उन्होंने भी उसका किया होगा, वैसे कॉल्स को कहाँ डाइवर्ट करना है. So tell me that for someone जो घर पे ये issues face कर रहा है, चाहे वो abusive relationship से हो या वो anxiety हो या वो stress हो या वो depression हो, वो कौन कौन सी चीजें अपने उस घर के दायरे में रह के कर सकते हैं दिन में. जैसे मैंने आपको कॉल किया सुबह, मैं 8-9 बजे उठी, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, मुझे माय चेस्ट इज टाइटनिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सुबह उठी, आई हैड अ बैड ड्रीम कि मेरे घर वाले किसी को कोरोना हो गया, कोई भी इस तरह का या सुबह को कुछ किसी से लड़ाई हो गई विथ द पर्सन हु इज अब्यूजिंग मी. हाउ शुड आई गो थ्रू माय डे? तो आप कोई 4 या 5 या 3 चीजें सजेस्ट करेंगी जो मुझे टिक के करनी चाहिए रोज टू ट्राई एंड मैनेज द सिचुएशन?
Well, I think that this is true for those of us who are feeling it and those of us who are not even feeling it yet, but may come to a point, because like I said earlier to you, we are all vulnerable people. हम में से जी कोई भी ऐसा नहीं है, because of the global pandemic, the way that it is on the rise, we are all vulnerable people. So we all must make sure that we are identifying what works for me. Okay, it's usually more difficult when you are in the situation rather than when you're not in the situation yet. Identify what works for you. For instance, if you feel, what is your coping, what is your go-to place? Is it, if for some people it's faith, if it's faith हम्म related, then those activities आपकी वो बढ़ जानी चाहिए, because it gives you a lot of power हम्म to feel that there is somebody more powerful than you who can take care of things, right? And that gives us mental peace. For those जी of us who are into meditation or yoga or de-stressing, things like that, हम्म physically de-stressing yourself makes a huge difference. Okay, we are all focusing on what we cannot do, right? I जी cannot do this, I cannot do this, I cannot do this, I used to do this, I used to do that. Why don't we focus on the stuff that I can do? Okay, if you ठीक है make literally like a list of हम्म things that I can do, and I tell people this, they find it to be a silly thing, but honestly, it's the only thing that works. Actually, make like a physical list of things that you can do, things that work for you, okay, and put it down somewhere. And when you are in that kind of a frenzy or distress, like the time that you were हम्म hypothesizing that you would call हम्म a person and say, you open that and it reminds you, because in a madness or in a frenzy or in a panic, you may not actually recall those things. But if you put हम्म it down and if you जी open that, if whether it's on like a cupboard or a personal diary or something, open it up, उसमें जो चीजें लिखी हुई होंगी आपको याद आ जाएंगी कि oh yes, I हम्म haven't done this, I haven't read my duas today, or I haven't meditated today, or I haven't done my, maybe I can do some kind of a workout at home, or some yoga poses or something like that. Maybe I can go cook today, therapeutically or something, or stitch, whatever works for you. Things that do. And for people who may say मुझे तो पता ही नहीं है, तो फिर आप, this is a good time for you to figure it out and read ओके on these things rather than what's happening related to the corona. So basically, you either go back to your faith या meditation करें, and दूसरा you make a list of things that you can do rather than things that you can't do, and you focus on those things. Anything else we can do other than these two things? हम क्या कर सकते हैं? Should we be connected? Should we pick up the phone and talk to people, या हमें अपने आप Well, में you रहना have to be चाहिए? very well. You have to be very selective. I would say both actually. You have to be very selective. You should stay connected with people because we are social beings, right? हमें इससे पहले तक अब जो हम में से अकेले रह रहे थे वो बाय चॉइस रह रहे थे, वो जबरदस्ती नहीं उनको जी रखा जा रहा था अकेले. तो आपको कनेक्टेड रहना चाहिए. इन दिस डे इन एज आई टेल पीपल, आई इनकरेज पीपल कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो कॉल्स और ये सब, मतलब देर सो इजी नाउ, उनको करें. It's almost as much as it's as close to you meeting a person, right? तो वो करते रहें, but also be okay with being alone as well. ओके तो मुझे आपकी ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि कोरोना की वजह से लोग शायद सीख जाएं कि वो अकेला कैसे रहें, और कोरोना की वजह से शायद जो अब्यूज विक्टिम्स हैं वो भी सीख जाएं कि उनको अपनी उस एनवायरनमेंट में रह के मैनेज करना है, वो भाग नहीं सकते सिचुएशन से. सो ये एक्चुअली हमारी बातों से मुझे दो पॉजिटिव्स नजर आए हैं जो इस सिचुएशन में हम नहीं देख रहे और हमें शायद देखना चाहिए. Absolutely. I'll give you an example of very short and effective example of a person who, one of my patients, he has an alcohol, he's been an alcohol abuser for a very long time. Okay. And now he's stuck in a situation where he has no access to alcohol and all of that. So from the first day, I told him this, that I just told him that, let's just use this as an opportunity for your confinement because of this corona, and जी after this you come out of this. And it has been 3 weeks, okay, now, since this lockdown and everything has taken place. And obviously because he doesn't have access, by ab to choice nahi thi, but जी because I'm changing his mindset about it, he's actually becoming so positive about it.
and that वो is मतलब he's probably one of the only few people who are saying कि जितनी देर भी रहेगा मेरे लिए तो ये अच्छा है because I'm going to come out of it stronger after this. Okay, so if we all look at it that way, तो जो भी हमारे issues हैं उनको face करना, भागना एक option जो हम हमेशा रखते हैं ना उस चीज से, that is usually actually it's not a good option. It's actually what pushes our problems away. If that was an option, तो फिर दुनिया में से domestic abuse और ये सब खत्म ही हो चुका होता ना. भागने की तो पहले options थे, अब नहीं है तो अब इसको face करके देख लें. जी. So basically it's a kind of rehab. We should look at it as a kind of rehab. Dr. Sabaa, is there anything else you want to tell our viewers or our followers is from your side कि जो आप चीजें देख रही हैं, आप expect कर रही हैं आगे बढ़ेंगी, and any advice you want to give them? Yes, I'm definitely going to actually catch on what you said. कि अपने आप के अंदर रहना सीखें, ये अपने साथ अकेले रहना सीखें. Most of us don't even know ourselves. Get to know yourselves. Understand what are the things that I like, what are the things I don't like, what are the things that upset me. Try and work on those things. And spend time with yourself and don't be scared to do that. Okay, we take it very lightly. Get to know yourself, understand yourselves, and work on the things that you feel like you're saying. Rehabilitate yourselves, that we come out of this better people and as a better societies and everything. And उसके अलावा जो लोग हैं जिनसे नहीं कोप किया जा रहा है, फिर वो अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के से कांटेक्ट में रहें जो ऑलरेडी इन थेरेपी थे. उनको मैं डेफिनेटली कहूंगी कि वो जस्ट इन केस के लिए भी डोंट गेट आउट ऑफ टच विद देम, स्टे इन टच विद देम. एंड जिनकी कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं थे और वो डेवलप कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो फिर इस तरह की मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस जो हैं उनका एडवांटेज लें, उनको कॉल करें. आम जिंदगी में इस तरह की हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते हैं, अभी मिल रहे हैं, तो उनको हमें यूज करना चाहिए. Honestly, if we don't make use of this now, we will have only ourselves to blame, because this is, like I said, it's free of cost. It's reliable people on the other end. So if we now don't make use of this as well, this is really on nobody else. Okay, great. Thank you so much, Dr. Sabaa. Thank you for all your advice and helpful knowledge. हम number दे देंगे हम screen पे. So and thank you for volunteering and helping out. No problem at all. It's my pleasure. I hope it works out for all of us in the end. Inshallah. बहुत शुक्रिया. Khuda Hafiz. Thank you everyone. Okay. So I hope आप लोगों को इससे कुछ फायदेमंद information मिली हो, and you know that if you need to call, there is a number on the screen जिसको आप call कर सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.